कॉलेज पटेल लर्निंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज इमर्जिंग क्रिएटर इन विच वी आर इनवाइटिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑलरेडी वी हैव डन 84 एपिसोड्स और आज हमारा 85th एपिसोड होने वाला है एंड वी आर इन इंदौर। और आज हम मिलने वाले हैं इन्फीस्पार्क के फाउंडर से, जिन्होंने पिछले लास्ट 7 ईयर्स से इस कंपनी में काफ़ी कुछ काम किया है। हम डिटेल्स में जानना चाहेंगे कि मैम ने किस तरीके से काम किया और मैम की क्या जर्नी रही है एंड क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू विद ओशिन चावन मैम। Thank you, Saurav. Thank you so much for having me, first of all. So, my journey started when I was still the student. So, कहते हैं ना कि आपको आपका स्टार्टअप जो है अगर आप कॉलेज में स्टार्ट करेंगे तो सबसे बेस्ट रहता है। एंड आई थिंक मैं स्टूडेंट्स जितने भी लोग या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, बिकॉज जब आप स्टूडेंट रहते हैं आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती। ना ही आपको मम्मी की दवाइयाँ लानी है, ना ही आपको सिस्टर की वेडिंग में कुछ करना है, ना ही आपको अपनी फ़ीस भी नहीं भरनी है। You are actually totally funded by your parents. So I took that as an advantage and I started the company when I was still in college. I did my post-graduation while I was running actually a startup. Okay. So with InfiSpark, we have been into the business from last 6 years and we have been working in the skilling domain from last 6 years, working with some of the global tech majors in the industry. Some of our direct clients are Microsoft, Amazon, WhatsApp, Facebook. अभी क्या है ना कि इतने टाइम तक जब हमने इतनी सारी कंपनीज़ के साथ में, उनके प्रोजेक्ट्स के साथ में काम किया, जिसके अंदर हमने कैंपेन आउटरीच करी. सो वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी हायर एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया एंड वी हैव वर्कड विद सम ऑफ द टॉप टियर कैंपसेस लाइक दी IITs टू बिट्स पिलानी टू VIT टू SRM से लगाकर tier 2 campuses and tier 3 campuses. We have focused a lot in the tier 2 and tier 3 campuses in the past 5 years to upskill the audience there and bridge the gap between industry and academia. So that's what we have been doing with students from last so many years. Okay, so that's our journey about a company. और इस इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड पूछना चाहेंगे ओशिन मैम से। जैसा कि मैम आप जानते हैं कि वी आर वुमेन ओरिएंटेड, जिसमें हमने काफ़ी वुमेन्स को हेल्प किया है। तो हम चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर पर्सपेक्ट्स क्या हैं और कंपनी में कुछ किस तरीके से आपकी जो कम्युनिटी है वुमेन्स को हेल्प कर सकती है और क्या इसमें इनिशिएटिव आप दे सकते हैं फ्रॉम योर इनपुट एज यू आर ऑल्सो अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, और क्या चैलेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, वो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे। जो वुमेन्स हम कोडिंग या इस लाइन में आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी अभी स्टूडेंट्स हैं, जैसा आपने बोला कि CS या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वो कोडिंग में आना चाहते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या चैलेंजेस आते हैं बीइंग अ वुमेन, थोड़ा सा आप गाइड करेंगे हमारे ऑडियंस को। So, Saurav ji, I know as being a woman and being a computer science graduate myself, I know the kind of challenges that girls have to go through when they are in the engineering colleges and when they are doing the computer science engineering. अभी क्या है ना, InfiSpark में I've spent 5 years traveling more than 200 plus universities across India. Okay. And I have interacted with so many girl students who face like a daily imposter syndrome about their very own code. जब वो इंजीनियरिंग कर रही होती हैं, आप किसी भी एक कैंपस में जाके देखिए, अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है लैब का और एक इफ़ अ बॉय एंड गर्ल आर सिटिंग टुगेदर एंड कोडिंग, तो आप देखेंगे कि देयर इज़ ऑलवेज द बॉय हु इज़ टेकिंग एन इंचार्ज एंड coding and programming and forming the programs. But on the other hand, the same girl, she may be the topper of the class, but she's still sitting with a pen and paper giving the in charge of the entire system to the boy. That kind of disparity exists, or maybe that kind of imposter syndrome within the girls exists. And I truly believe that as a woman, I feel much more comfortable if I have a community of women surrounding for maybe any particular topic. आप देखते हैं, आप खुद एक women entrepreneur का circle चलाते हैं, and that's you have come up with that idea because आपको लगता है कि that makes women feel more comfortable. Yeah. So we are also coming up with this new initiative called as She Loves Code, which is a totally women-centric initiative, and it's a pay-after placement initiative. So we are encouraging women from the final year of their computer science from the computer science engineering to be the part of our program. We're going to train them for the first 6 months totally free of cost. You don't have to shell a single rupee to be the part of the course. The training is absolutely free. Once you have
completed the entire training, we have upskilled you. After that, we are going to place you in a company with minimum 4.5 lakh of package, and once you have been placed, you can start paying us from your monthly salary, some 15-20% of your monthly salary, and that's going to be the course fee. So if you do not get placed by any chance, you don't have to pay anything. So we also have a lot of skin in the game. We want to do our work with a lot of honesty, and that's why we have come up with this sort of initiative. But then again, this coding bootcamp is first in India, which is women-centric. Okay. And we are looking forward to expand this and offer this for all the students across India in the coming days. ओके, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मैम ने बताया कि जो मैम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी हमारी ऑडियंस हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर हमारे वीडियोज़ या इंटरव्यूज़ देखते हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मैम को सपोर्ट कर सकते हैं। और इनिशियल लेवल पे जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा लोगों का सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप मैम को सपोर्ट करेंगे और जो लोग अगर सीखना चाहते हैं या तो मैम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके इनिशिएटिव में वो पार्ट ले सकते हैं, और वहाँ पे सारी मैम गाइड करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो डेट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओशीन जी, एक बेसिक क्वेश्चन है जो हम अपने सभी स्पीकर से करते हैं जिनसे हमने इंटरव्यू लिए हैं, और हम जानना चाहते हैं कि जो हमने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने इनिशिएटिव लिया था और ऑलरेडी वी हैव डन 84 एपिसोड्स इन दैट। सो हम जानना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपकी व्यूज़ क्या है जो इमर्जिंग क्रिएटर हमने स्टार्ट किया है, और आपको हमने एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपना थॉट शेयर करें, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, तो उसके रिगार्डिंग आपका व्यूज़ क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे फॉर आवर ऑडियंस। Saurabh ji, this is such a great initiative. I think कहीं ना कहीं वो डिस्पैरिटी आज की तारीख में भी एग्जिस्ट करती है, स्पेशली इंडिया के अंदर, जहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कम लोग सीरियसली लेते हैं। और ये दिस इज़ जस्ट द रियलिटी, टू बी टेकन वेरी सीरियसली एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, it's something that every women entrepreneur aspire for, and we genuinely appreciate this kind of initiative and what you are doing. So thank you so much, and thank you so much for having me, in fact. Thank you, Osheen, for the wonderful words for a platform. So next question is last question for the today's interview. जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर हैव मेक एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स, और रिसेंट में काफ़ी एक्टिविटीज़ एंड प्रमोशंस इवेंट्स हो रहे हैं, और रिसेंटली आपने भी 1-2 इवेंट्स अटेंड किए हैं जिसमें वुमेन सेंट्रिक जिन्होंने सर्कल बुलाया था और काफ़ी ज़्यादा थॉट्स लिए हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं मध्य प्रदेश में और ख़ासकर बेसिकली इंदौर में, तो इसके रिगार्डिंग में आप क्या कहना चाहेंगे जो इनिशिएटिव लिया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने? सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मुझे लगता है कि इवन दो आपने जैसे बताया कि कुछ इवेंट्स पास्ट में हुए हैं जो कि वुमेन सेंट्रिक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा इवेंट्स करने की रिक्वायरमेंट है। आज हमने कुछ 3 या 4 स्पीकर्स को, वुमेन स्पीकर्स को बुला के वी हैव ट्राइड टू डू द कॉन्फ्रेंस, बट इफ़ यू लुक एट the events which are conducted in general for the entrepreneurs as compared to women centric events, there's still a lot of scope. We still need to conduct more events like this so that women like us and many others who are watching this particular episode feel more empowered. These events are very very necessary when it comes to networking as well. जैसे आपने बताया लास्ट इवेंट में when I was the speaker, I actually found out 2 people who were in the same panel along with me, with whom I can do the business directly. I was searching for somebody who could make a wonderful design, and yet there is another panelist who is she's doing a wonderful job in that particular area. So these events are very very important for people like us to attend, and I would always advise all the people who are watching this episode that your network is your net worth. So do as much networking as possible, try to keep your connections alive, try to be as connected as the industry. This is small word, you never know, the person that you're talking to might be your next client. Okay. Yeah. So this was all about today's interview. Before we end today's interview, एक last question हम मैम से पूछना चाहेंगे कि जो ऑडियंस हमारी इस समय हम देख रही हैं या जो हमारे वीडियोस को देखेंगी, तो लास्ट वर्ड्स फॉर द ऑडियंस ऑफ इंडिया एंड इंदौर। फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स who are still in college watching this episode, I would say start in college, start early. It doesn't matter if you succeed or if you fail. Even if you fail in your life, I would advise fail big, fail early, and keep trying to pursue your dreams. Okay.
Thank you, Oshin, for being on a platform and sharing your wonderful thoughts. And in future also we have some projects. So again we will be taking your help if any possibility will be there. So we will contact you again soon. So that was all about yeah. So this was all about our today's interview. I hope people will learn something from this. At least if 1% change will be there, whatever she has told and whatever we are कि हम जो चाहते हैं कि आप लोगों तक चीज़ें पहुँचें, और सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ओपन रखी हुई हैं, ओपन सोर्स है, आप सारे चीज़ इंटरव्यूज़ देख सकते हैं. तो उम्मीद करते हैं कि आज का इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा. सौरभ दिस साइड फ्रॉम नॉलेजेबल लर्निंग अकेडमी. थैंक यू.